दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए सब्जेक्ट से रिलेटेड। लाइक अब तक जो वीडियो बना है उसमें हमने टेक्निकल और कुछ टेक्निकल नहीं न्यूमेरिकल लेवल पर मैंने बात की थी। आज मेरे लो लेवल पर बात करने जा रहे हैं और आज सोशल साइंस जियोग्राफी, पर्टिकुलरली जियोग्राफी में हम बात करके आ रहे हैं। और इसमें आज मैंने एनसीईआरटी का बुक लिया है, जियोग्राफी क्लास 6। आई होप आप सभी के पास फिजिकल लेवल होगा, तो इसका कंक्लूसिव वे में कैसे स्टडी करें। लाइक इससे अगर कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसको केवल रीडिंग लगा के काम नहीं, निचोड़ निकालना। तो आ जाते हैं पहले चैप्टर पे। तो पहला चैप्टर है, इसमें कितने चैप्टर्स हैं? कुल मिलाकर 8 चैप्टर्स हैं। अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2 भी है इसमें। तो पहला चैप्टर हमारा है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आई विल रीड द बुक. It is just in English. I will read the book and try to find out the important points that are very much relevant and maybe ask me the questions relevant in many examinations like UPSC, UPSC or other examinations. I should also sound So let's come to the point. The first chapter is the Earth in the solar system. The Earth in the solar system. Now I am going to read the book. How wonderful it is to watch the sky after sunset. जब सनसेट हो जाता है, लाइक सन पश्चिम में चला जाता है, तब की बात हो रहा है। How beautiful the view is. One would first notice one or two bright dot signs in the sky. One or two dot sign means the stars that will glow after sunset. So soon you would see the number increasing. इसके बाद क्या होता है? You will see the number increasing. Means stars, more stars will be visible as it will be dark. You cannot count them anymore. Counting करना बहुत ही मुश्किल है. The whole sky is filled with a tiny shining object. पूरा आकाश जो होता है छोटे छोटे tiny objects से भर जाता है. Some are bright, others are dim. ब्राइट और डिम क्या होता है? ये डिपेंड करता है कि उसका डिस्टेंस क्या है। बहुत दूर होगा तो उसका लाइट पहुंचते पहुंचते बहुत बार रिफ्लेक्ट डाइवर्ट होते होते आता है, जिस वजह से उसका जो ग्लो करने लगता है, लाइक शाइनिंग हो जाता है उसमें। कभी डिम होगा, कभी लाइट पूरा ग्लो करने लगेगा, उस तरह से होता है। It seems like sky is studded with diamonds. Sky क्या है? Sky पूरे डायमंड से भरा हुआ। ठीक है? स्टार्स क्या होते हैं? डायमंड की होती है, ग्लो करते रहते हैं। इसी में एक क्या होता है? मून होता है। जो कि सन से लाइट को एब्जॉर्ब करके ग्लो करता है।
It seems the sky is starred with the diamonds. They all appear to be twinkling. Twinkle करना मतलब कभी डिम हो जाना, कभी ग्लो करने लगना, twinkling. But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. कुछ twinkle नहीं करते हैं, लाइक दूसरे जो कर रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में वो twinkle नहीं करते हैं. तो उसका रीजन क्या है? कुछ स्टार्स काफ़ी नज़दीक भी होते हैं, कुछ स्टार्स काफ़ी दूर होते हैं. कुछ स्टार्स का जो लाइट है वो बहुत बार डिफ्रैक्ट होते 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 स्कैटर्ड होते हैं या फिर हमारे एटमॉस्फेयर के एनवायरनमेंट में इंटर करता है. तो उसका जो मतलब कई बार डिफ्रैक्शन होने की वजह से वो क्या होता है, मतलब ट्विंकल करता है. कुछ जो ज़्यादा डिफ्रैक्ट नहीं होता अपने पास से, वो ट्विंकल नहीं करता है. They simply glow without any flicker, just as the moon shine. जैसे they simply glow without any flicker. कुछ जो होते हैं बिना किसी ट्विंकलिंग के क्या करते हैं, ग्लो करते हैं, जैसे कि मून करता है. मून एकदम जितना लाइट एब्जॉर्ब कर लिया उस लाइट से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का यहाँ से वेव निकलेगा जो हमारे आंखों तक पहुँचता है. वही लाइट वेव जो है हमारी आंखों तक पहुँचता है और उसी को हम देख पाते हैं उस मून को. Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. इन ब्राइट ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक मून दिखता है. ठीक है. मून दिखता है. You may also see the moon on most of the day. It may, however, appear at different times. अलग अलग समय पे अपीयर होता है. In different shapes at a different position. अलग अलग शेप में भी वो दिखता है. कभी फुल मून होता है, कभी हाफ मून हो जाता है, कभी थोड़ा सा मून दिखता है, कभी हाफ हो जाता है. तो ये सब क्या है? In different shapes and different positions. You can see the full moon only once in about a month. एक महीने के अंदर जो फुल मून होता है वो एक बार दिखता है, वन डे. Once about a month's time. It is a full moon night and it is called full moon night. क्या बोलते हैं इसको? पूर्णिमा. ओके, इसको पूर्णिमा बोलते हैं. फुल मून नाइट और पूर्णिमा. A fortnight later, you can see it at all. It is a new moon night और अमावस्या. इसके जस्ट एक दिन बाद you cannot see it at all. ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है. तब ये था डार्क हो जाएगा. इसको क्या बोलेंगे? न्यू मून नाइट, नाइट सन और अमावस्या. अमावस्या. On this day you can watch the night sky best. इस दिन हमारा जो आकाश है वो सबसे परफेक्ट दिखता है, प्रोवाइडेड इट इज क्लियर नाइट. क्या होना चाहिए? पूरा क्लियर नाइट होना चाहिए. Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime?
अब ये तो बहुत ईजी बात है, आपको लगता है सभी लोगों को पता भी होगा कि सुबह के समय में, दिन के समय में तारे और मून हमको क्यों दिखाई नहीं देता है? क्योंकि जो सनलाइट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है और सनलाइट जो चारों तरफ फैल जाता है, उसकी वजह से हमारे जो ट्विंकलिंग स्टार्स हैं उनका ट्विंकल नहीं दिख पाता है उस लाइट के रेस्पेक्ट में, उसका जो इंटेंसिटी है बहुत वीक होता है, तो वो सब नहीं दिख पाते हैं, ना ही मून का लाइट दिख पाता है। क्योंकि मून भी क्या करता है, सन से लाइट को ऑब्जर्व करता है और उसी को हमारे आँख पर लाइट अगर ये सन है, ये मून है, तो यहाँ से लाइट जाता है और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे आता है। ये अगर सन है और ये अगर मून है, ऐसे होता है। अब चूंकि मॉर्निंग का टाइम होगा, ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर नहीं आएगा, इससे डायरेक्ट लाइट आने लगेगी, इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होगी। इंटेंसिटी जब हाई होगी तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा इसकी इंटेंसिटी तो कम होगी, ये मून का जो शेप है वो दिखाई नहीं देगा बस bright tiny object to imitate it because the very bright light of the sun does not allow us to see all. वही बात है, it is because very bright light of sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. रात के स्काई के ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके जो लाइट की इंटेंसिटी है सन के काफ़ी क्लोज होने की वजह से स्पेक्ट में काफ़ी कम होती है। ठीक है, सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडी, ये आप लोगों ने समझ लिया होगा, फुल मून नाइट, पूर्णिमा, न्यू मून नाइट, अमावस्या। अब कह रहे हैं सन, मून एंड objects shining in night। ये और इन सबको क्या बोलते हैं, स्टीललेस बॉडीज। celestial bodies, some celestial bodies are very big and hot, they are made up of gases। क्या होता है, कुछ गैसेस के बने होते हैं celestial bodies, they have their own heat and light, उनका अपना हीट और लाइट होता है, which they emit in large amount, जो कि बहुत large amount में emit करते हैं। these celestial bodies are called stars। जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स है उसी को स्टार्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, हीट और लाइट इनका होता है अपना, लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, द सन इज अ स्टार। अब अगर सन की बात करें, सन की बात करें, इसका भी हीट प्लस लाइट अपना है, हीट प्लस लाइट अपना है। ये भी क्या है, एक तरह का स्टार हो गया। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन नाइट स्काई आर सिमिलर टू सन। जो रात में हमारे स्टार्स ट्विंकल करते हैं वो और सन दोनों एक जैसे ही होते हैं, बस फर्क इतना है कि जो सन है वो अर्थ के काफ़ी क्लोज है और जो स्टार्स हैं उनका डिस्टेंस काफ़ी दूर, काफ़ी ज़्यादा है, लाइक
और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में भी, मेरा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में तो ये अर्थ भी सन से है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लेकिन क्या बोलते हैं, स्टार्स जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में है, मतलब काफ़ी लाइट ईयर्स पारसेक में भी बहुत दूर चले जाते हैं, पारसेक में भी हो सकते हैं। वो काफ़ी दूर होने की वजह से उनका जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो ब्लिंकिंग करते हुए दिखाई देते हैं रात but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very far from us, हमसे काफ़ी ज़्यादा। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, छोटे दिखते हैं when seen from a distance, डिस्टेंस से देखने पर सारे ऑब्जेक्ट्स क्या दिखते हैं, स्मॉलर दिखते हैं। How small an aeroplane looks, एक एरोप्लेन कितना स्मॉल दिखेगा। How small an aeroplane looks when it is flying at great height. काफी हाइट पर जब कोई एरोप्लेन उड़ता है तो उसका भी साइज बहुत छोटा होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ, while watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. Different group of stars मिलकर various pattern बनाते हैं। These are called constellations. Constellation. Constellation. कॉन्स्टिलेशन में पहला आ जाता है कोर्सा मेजर। या बिग इसको बिग is one such constellation. One of the most easily recognizable constellation is Saptarishi. कौन सा है, सप्तऋषि। सप्ता सेवन ऋषि sages. It is group of seven stars. Seven stars. सात स्टार्स का ग्रुप होता है। That forms a part of Ursa Major constellation. क्या करते हैं, Ursa Major का पार्ट बनाते हैं। Ask someone elder in your family and neighborhood to show you more stars, planets, and constellations in the sky. Ursa Major होता है, Ursa Minor भी होता है, ठीक है, हो सकता है। अब यहाँ पे कहाँ दिया है मुझको नहीं समझा रहा है, यहाँ पे दिखाएंगे दिया मुझे, उसके बारे में ज़्यादा सर्च करके भी जान सकते हैं। ये तो तरह का है। In ancient times, people used to determine direction during the night with the help of stars. पुराने समय में क्या करते थे लोग, स्टार्स की मदद से डायरेक्शन डिफाइन करते थे, डायरेक्शन को डिफाइन करते थे। नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। स्टार होता है जो कि हमेशा नॉर्थ में ग्रो करते रहते हैं, ट्विंकल करते रहते हैं। So determine direction during the night with the help of stars. The north star indicate the north direction. It is also called pole star. क्या बोलते हैं इसको,
pole star. It always remains in the same position in the sky. We can locate the position of pole star with the help of सप्तऋषि. सप्तऋषि की मदद से हम लोग इसका पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं. लुक एट फिगर 1.1 यहाँ पे दिया हुआ है 1.1. इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7. इसी की मदद से इस लाइन को मिला देते हैं तो वो दिखता है. The north star indicates the north direction of pole star. It always remains in the same position in the sky. We can locate the position of pole star with the help of subtraction. Look at 1.1. You notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer star, ये दो stars हैं, pointer star को माना, and extended further, it will point to the pole star. क्या करेगा? Pole star की ओर point करेगा. Pole star ऐसे pole star की ओर वो indicate करेगा. Some celestial bodies do not have their own heat and light. उसका अपना heat और light नहीं होता है. Like they are lit by the light of the stars. Stars के light के द्वारा वो मतलब light पाते हैं. Such bodies are called planets. Planets का है they are such planets. The word planet comes from the Greek word planet. Yeah, time. Planet. Planet time. Which means wanderers. क्या होता है? Wanderers. The Earth on which we live is a planet. Live is a planet. It gets all its heat and light from the sun. क्या करता है? It gets all its heat and light from the sun. सन से इसको क्या मिलता है? हीट और लाइट दोनों मिलता है. Which is our nearest star. सबसे nearest star कौन है? सन. इसी से हमको हीट और लाइट मिलता है. If we look at the Earth from the great distance, अगर हम अर्थ को बहुत दूरी से देखें, say the moon. If we look at the Earth from the great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. It will appear to be shining just like the moon. कैसा शाइन करेगा? अर्थ को अगर हम बहुत दूरी से देखें, say at the moon, मून से अगर देखेंगे, it will appear to be shining just like the moon. मून की तरह शाइन करेगा. अर्थ को मून से शाइन लाइक the moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our Earth and moves around it. मून क्या है? अर्थ का सैटेलाइट. मतलब मून अर्थ के चारों तरफ चलता रहता है. Companion of our Earth and moves around it.
और इसके अराउंड लाइक our Earth, there are 7 other planets that get heat and light from sun. टोटल कितने हो गए प्लैनेट? 8. एक अर्थ हो गया, 7 other planets. Some of them have their moons too. कुछ के भी अदर मून भी हैं, कुछ प्लैनेट के कुछ मून्स हैं. इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे. तब सोलर सिस्टम चलिए बात. सोलर सिस्टम में बात करते हैं. Sun, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids. Sun, planets, satellite. Other celestial bodies known as asteroids, क्या है सोलर सिस्टम के पार्ट्स? Sun, planets, satellites, asteroids and meteoroids. Meteoroids इसमें क्या है? सोलर सिस्टम के पार्ट्स हैं. देखिए इसमें लिखा हुआ है. इंटरेस्टिंग फैक्ट में जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स. तीनों के पास क्या है? जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग अराउंड देम. दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिस. डेब्रिस मतलब क्या होता है? मतलब कचरा जो होता है, उन सबको डेब्रिस होते हैं. उनके अराउंड उसका कचरा फैला हुआ है. These rings may be seen from Earth with the help of powerful telescope. अब देखिए इसमें दिया हुआ है मरकरी, मरकरी 1 ऑर्बिट अराउंड सन 88 days, 1 स्पिन अराउंड एक्सिस 59 days. ये सब आप पढ़ लीजिएगा. वीनस का दिया है, अर्थ का दिया है, मार्स का दिया है, जुपिटर का दिया है, सैटर्न का दिया है, यूरेनस का, नेपच्यून का दिया है. ये 8 प्लैनेट्स. Meteoroids form the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. Sun क्या है? Head है. Sun. The sun is the center of solar system. It is huge and made up of extremely hot gases. बहुत hot गर्म गैस से बना होता है. It provides the cooling force that binds the solar system. सोलर सिस्टम को बाइंड करने के लिए फोर्स चाहिए, वो प्रोवाइड करता है. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय us because despite being our nearest star, it is far away from us. नियर तो है लेकिन बहुत दूर है. फिर भी हम से द सन इज अबाउट 150 million किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. 150 million, तो समझ में आया. 150 million kilometer away from the Earth. अगला आ जाते हैं planets. There are 8 planets in our solar system. 8 है. In order to their distance from Sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Mercury, Venus, Earth,
Saturn, Uranus, Neptune. ये 8 है। अब इनको याद करने का एक तरीका होता है। माई वेरी mother teachers receiver the sir support us nurse all the 8 planets of solar system move around the sun in this path. ठीक है, these paths are elongated, they are called orbits. क्या बोलते हैं इसको? ऑर्बिट बोलते हैं. It takes only about 88 days to complete one round around its orbit. Mercury is the nearest sun, and it takes only about 88 days to complete one round around its orbit. Venus is considered as Earth's twin. Venus को क्या बोलते हैं? अर्थ का ट्विन बोलते हैं उसको. वेनस को क्या बोलते हैं? अर्थ ट्विन. Because its size and shape are very much similar to that of size, shape, was similar. Till recently, towards 2006, Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Units, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies, Series 2003 UB313, प्लूटो को क्या बोला गया? UB313, एक celestial body discovered in recent past may be called a dwarf planet. dwarf planet UB313 को डिस्कवर किए गए हैं. प्लूटो को भी हटा दिया गया है. ठीक है, 2006 तक कह दिया गया था, मतलब इसको माना गया था कि ये प्लैनेट है, पर टोटल 9 प्लैनेट हो जा रहे थे. जब 2006 के बाद ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का जो मीटिंग बैठा उसमें इसको डिस्कस किया गया. नहीं, प्लूटो का जो साइज है और शेप है उस बेसिस पे ये मतलब प्लैनेट के लायक नहीं है, इसको प्लैनेट के कैटेगरी से बाहर कर दिया गया. अब आते हैं तो अर्थ. अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. The Earth is the third nearest planet to the Sun. Third nearest. In size, it is the fifth largest planet. Fifth in size.
is slightly flattened at the poles. पोल्स के पास कैसा है? ठीक है, ठीक है, slightly क्या है? Flattened है. It is slightly flattened. That is why it is described as a geoid. क्या बोलते हैं इसको? Geoid means not like shape. Conditions favorable to support life are probably found only on the Earth. इसी पे देख लेते हैं. You know, Sol in the Roman mythology is a sun god. Solar means related to sun. The family of the sun is therefore called the solar system. ठीक है. Write down as many words using this word solar on your own as you can. सोलर से रिलेटेड वर्ड सीखना है. वर्ड मीनिंग में जियोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ अर्थ को. जियोमेट्री किसको बोलते हैं? मेजरमेंट ऑफ द अर्थ. जियोइड किसको बोलते हैं? रिजेंबलिंग द शेप ऑफ फॉर्म ऑफ अर्थ. जियोइड. ठीक है. कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट life are probably found only on Earth. The Earth is neither too hot nor too cold. It has water and air, which are very essential for our survival. The air has life-supporting gases like oxygen. Because of this reason, the Earth is a unique planet in the solar system. क्या हो गया? लाइफ सपोर्ट करने के लिए गैसेस भी हैं यहाँ पे. नहीं हॉट है ज़्यादा, ना कोल्ड है ज़्यादा. तो अर्थ क्या है? यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. यूनिक. From the outer space, the Earth appears blue because of its two-thirds surface is covered by water. दो-तीन surface किससे covered है? Water से. इसमें इसको क्या बोलते हैं? It is therefore called blue planet. The moon. Our Earth has only one satellite, that is Moon. Its diameter is only 1/4 of that of the Earth. एक चौथाई से किसका? Earth का. It appears so big because it is nearer to the outer planet than other celestial bodies. It is about कितना दूर है? 3,84,400 kilometers. Now you can compare the distance of the Earth from the Sun and that from the Moon. The Moon moves around the Earth in about 27 days. Moon moves around the Earth in about 27 days. 27 days में क्या करता है? चक्कर लगाता है. It takes exactly the same time to complete one spin. एक स्पिन लगाने में मुझे स्पिन
As a result, only one side of moon is visible to us on Earth. एक साइड visible हो जाता है इसका, अर्थ पे केवल एक साइड visible। वहीं अभी जो चंद्रयान लॉन्च हुआ था, जिसमें कि हमको साउथ पोल में जाने के लिए इस मिशन को एग्जीक्यूट किया गया, तो इसका रीजन यही था। नॉर्थ पोल तो विजिबल हो जाता है, लेकिन उसका साउथ पोल जो होता है वो डार्क होता है, तो वो हमारे तरफ नहीं आ पाता है। वो इस तरह से स्विंग करता है कि इसका मन स्विंग करते करते 27 डे लग जाता है, और एक राउंड भी लगाने के बाद वो 27 डे लग जाता है, तो उसका एक ही साइड दिखाई होता है हमको। तो दूसरे साइड में भेजने के लिए हमने मिशन लॉन्च किया, हमने मतलब लिया और वो सक्सेसफुल हुआ। सेकेंड वाला अच्छा है, हमको लग रहा है फेल हो गया था कि जो मेरा गया सक्सेसफुल रहा। The moon moves around the earth in about 20, ठीक है। The moon does not have conditions favorable for the life. It has mountains, plains and depression on it. Light travels with 3 lakhs किलोमीटर पर सेकंड स्पीड से ट्रैवल करता है। Interesting fact: Neil Armstrong was the first man to step on the surface of the moon on 20 July 1969. Final Peter had landed on the moon. A satellite is a celestial body that moves around the planet in the same way as the planet moves around the sun. Some human-made satellites like INSAT, IRS, EUSAT are there. So, surface. Reflection on its surface. This cast shadow on the moon's surface. Look at the full moon and observe these shadows. Now we are at asteroid. What is asteroid? Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. They are found between the orbit of Mars and Jupiter. Between Mars and Jupiter, scientists are view that asteroids are part of a planet which exploded many years back. साइंटिस्ट का व्यू क्या है? asteroids are part of the planet, किसी प्लेनेट का पार्ट है जो कि एक्सप्लोड हुए थे many years ago. many years back. asteroids क्या होता है? The small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids. Small pieces of rock are small pieces which move around the sun are called meteoroids. The sun के अराउंड tiny of bodies को asteroid बोलते हैं, small pieces of rocks को क्या बोलते हैं? meteoroids बोलते हैं. Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop on it. कभी-कभी क्या होता है कि अर्थ के नजदीक आने की कोशिश करते हैं और उस पर गिर जाते हैं. During this process, due to friction with the air, they get heated and burn. कभी-कभी इस प्रोसेस के दौरान फ्रिक्शन से क्या होता है, एयर से फ्रिक्शन होता है, they get heated, हीट हो जाते हैं, बर्न कर जाते हैं.
causes a flash of light, sometimes a meteor, without being completely burned, falls on the earth and creates a hole. Next, nature and sun. Do you see the whitish broadband, like a white glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of millions of stars. This band is Milky Way galaxy. Something like this. Whitish looks like white. Our solar system is a part of this galaxy. Solar system is part in ancient India. It was imagined to be the river of light flowing in the sky. Like the cities, it was named Akash. A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that make the universe. Millions of galaxies makes the universe. It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. This is Earth. Solar system. So this is the end of the chapter. Now we are in the exercise. How does a planet differ from a star? Stars has its own light and heat, while the planet don't have. What is meant by the solar system? Solar system is made by the combination of sun, 8 planets, asteroids, meteoroids, all together make solar system. Name all the planets according to their distance from sun. From distance from sun, first is Mercury. Mercury के बाद Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Why is the Earth called dwelling planet? Because here life can exist. While on other planets it is very difficult to exist in life. How do you see only one side of moon orbit? Because it takes 27 days to move around Earth and also take 27 days to spin around its own axis. And that is why only one side is visible while the other side is hidden. What is the universe? The universe is a combination of solar system, Milky Way. Take the correct answer. The planet known as the Earth is twin Venus, which is the third nearest planet to the Sun. Earth. All the planets move around the Sun in elongated paths. A pole star indicates the direction of North Pole.
Asteroids are found between the orbits of Mars and Jupiter. A group of stars forming varying pattern is called as Ursa Major. Few system of stars is called galaxy. This is the closest celestial body to our Earth. Mars and Venus. This is the third nearest planet to the Sun. Earth planet do not have their own light and energy, heat. Okay, this is the end of the chapter. Thank you so much.